Welcome students to your EVS class. We are back with our EVS period today and I hope you have done your exams well. Good. So now we are going to begin with a new lesson as we have completed lesson number 5 till the last week, and now we are going to begin with lesson number 6. Let us be safe, and the page number to this will be 172. So be ready with your semester 2 book, EVS part, page number 172, that is let us be safe. Yes? Now, what do you mean by safe? Safe means protected, है ना, सुरक्षित. Nowadays सेफ वर्ड इज वेरी कॉमन क्योंकि वायरस चल रहा है, तो अब आपको समझ में आएगा कि सेफ, बी होम, बी सेफ, राइट. घर रहो और सुरक्षित रहो. Yes, so safe means to be protected, to stay protected. And now we are going to learn about some things that we come across in our house, at our home, at our school, at playground, on road. So there are many safety rules that we should follow to be safe, to be protected, so that we do not get injured. हमें चोट ना लगे, हम किसी तरह से एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, घर पे हो सकता है, आपके स्कूल में आप एक्सीडेंट हो सकता है, रोड में हो सकता है, आप जहाँ खेल रहे हो दैट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है. फॉर दैट सम सेफ्टी मेजर्स, सम सेफ्टी रूल्स वी हैव टू फॉलो to avoid accidents. Accidents means घटनाएं जो हमें लगती है ना, हमें चोट लगती है, हम कहीं गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है. सो दैट मीन्स यू आर मेट विद एन एक्सीडेंट. ओके, जो सडनली होता है, हमारे अननोइंगली होता है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट. ओके, सो now there is a warm up exercise. You are using scissors and cutting some pictures to paste in your scrapbook. Suddenly you cut your finger. We used to have some scissor work, है ना, हमारे जैसे घर पे हमने कुछ पेस्टिंग के लिए या कुछ पिक्चर्स हमने कट कर लिया एंड सडनली यू गॉट अ कट, आपका हाथ में वो सिजर लग के कट हो गया. सो व्हाट विल यू डू? दिस यू हैव टू फिल बाय योरसेल्फ. दिस विल बी योर इंडिविजुअल आंसर इन द वार्म अप बॉक्स कि आप क्या करोगे तब जब आपका हैंड या आपके हैंड में चोट लग जाती है, फिंगर में चोट लग जाती है. ओके, दैट इज हैज टू बी डन बाय यू. Clear students? So now accidents क्या होते हैं? Accidents can be big, can be small. छोटी सी चोट भी हो सकती है, बड़ी सी भी चोट हो सकती है, right? So anytime, any place. So it can cause serious damages. कुछ जो होते हैं वो हमारे, हम कुछ उसमें क्रीम अप्लाई कर देते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कर देते हैं, डेटॉल से क्लीन करके हम बैंडेज लगा देते हैं. सो दैट विल बी ओके. बट सम जो हमें बहुत बिग एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे लिए डेंजरस होते हैं, राइट. सो इट शुड बी अवॉइडेड. हमें एक्सीडेंट से दूर रहना है, तो उसके लिए हम जो होता है हम सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हैं, राइट. we used to follow the safety measures. For that we have to use the safety measures to avoid accidents. Understood students? Okay. So now at home we are going to cut. Today we are going to take at home and at school, two places where we can avoid accidents or we can be safe. So how we can be safe? Let us see. At school, at home, first we will say at home. At home, what are things we can find with we can find knife, scissors, switches, right? So these all are the things with which we can meet with an accident. So scissors, knives, blades, these we should not use. We should not use sharp objects. Sharp objects are scissors. Scissors, you know na? Yes, scissors. Then blade also is there, available at our homes. Then knives. You know what are knives? No, knives, चाकू जिससे हम vegetables कट करते हैं. We cut vegetables with knives. Yes, yeah. Fruits and vegetables we cut with knives. So knives, okay. Knives are
that we call as चाकू, that we use to cut the vegetables or fruits. They are called knife. Knife बोलते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं तो knives बोलते हैं, right? So these are the things that can cause us hurt. These things has to be taken when you are using this thing. Some elder person should be there with you. आपके साथ कोई भी बड़ा, आपसे बड़ा आपके साथ होना चाहिए, कोई भी ग्रोन अप. ऐसा नहीं कि भाई है तो वो मेरे से बड़ा है तो 1 साल बड़ा है वो उनके साथ. नो, थोड़े से समझदार लोग, यू कैन से एडल्ट, ओके. कोई भी बड़ा लोग जो उनको हैंडल करना होता है, जिनको सिजर्स नाइफ सब हैंडल करना होता है केयरफुली, उनके साथ ही आप इनका यूज कर सकते हो, राइट. यू शुड यूज दिस with the help or with the guidance of an elder person. Understood, students? So you should not touch this without any help of your parents or any elder person. You should use this. If you want to use this, you should take somebody's help, that is elder to you and who the person who know to use this, जिनको carefully use करना आता है. So that's why sharp objects जो हमें चोट पहुंचा सकती है वो है scissors, blades and knives. So this has to be used in the presence of an elderly person. Understood, students? Yes. So next dangerous things we can see in our house is electric wires, electric sockets. You can see small जो children होते हैं, they are very small and they don't know what are the switches and what are the bad effects of the switches or bad effects of the electric sockets. लेकिन अगर वो बच्चा उस सॉकेट के अंदर फिंगर डालता है and such switch on हो जाता है, then what will happen? Yes, shock लगेगा ना, he will or she will get shock. Yes, so it's very dangerous to play with electric switches. It's very, if you want to open the switch or if you want to turn on the switch, what you are going to do, you are going to wear slippers. Don't switch on or off with bare foot. Bare foot means आपके पाँव में कुछ भी ना हो, ऐसे आप switch को touch नहीं करना. Always wear a slipper, rubber slippers. Okay, slippers पहन के आपको switches को on या off करना है. And most importantly, if your hands are wet, wet means क्या होता है, गीला हो, गीले हाथ से कभी switches को नहीं छूना चाहिए, वो भी एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. एंड शॉक लगेगा तो it can be very very dangerous for your life. So electric switches, okay, electric switches are also dangerous thing. If you will not take care of it, electric switches should be you touched or used anything with rubber slippers. Okay, आपको rubber slippers पहन के उसको या shoes slippers पहन के उसको turn on या turn off करें, and don't use it with wet hands. Understood, students? Next dangerous thing is matchstick and lighters. When you go to kitchen, you can see cylinder is there. It is full of gas, filled with gas, and if you light the matchstick or lighter in front of it, it can be dangerous for you. So don't use matchsticks and lighter. Matchsticks, you know, no? Matchsticks and lighter. These are also another dangerous thing that we find in our house. If it is not used properly or carefully, it can cause your life damage. Okay. Then you should keep your books properly, toys properly. After studying, you should keep your books and copies at the proper place where your mother has allotted you the place. And your toys also should go back to the toy box from where you have taken after playing. This I can say that most of the students are not following. Most of the children are keeping the toys here and there. After playing, it is all
scrambled over here and there. So after playing आपको अपने टॉयज अपने टॉय बॉक्स में रखना चाहिए, आपको अपने बुक्स एंड कॉपीज पढ़ने के बाद अपने कबर्ड में जहाँ पे भी मामा ने आपको स्पेस दिया है या अपने बैग में वापस रखना चाहिए, सो दैट कैन ऑल्सो कॉज यू एन एक्सीडेंट. While mopping the floor means मम्मा आपके फ्लोर क्लीन करती है, राइट. सो mopping the floor means फ्लोर जब वेट रहता है, mop you know गीले कपड़े से. Okay, when your mother is mopping the floor, or when anybody, not only mother, if anybody is cleaning the floor with water, you should sit at a place rather than running here or there, because you will slip down and you will break any one of your teeth. That's for sure. आपके दांत जरूर टूटेंगे. ओके, सो व्हेन मदर इज क्लीनिंग, जब मम्मी पोंछा लगा रही है, मॉपिंग मीन्स पोंछा लगाना. सो व्हेन मदर इज मॉपिंग द फ्लोर, वाटर से क्लीन कर रही है फ्लोर, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सिट बाय साइड until and unless वो जो फ्लोर सूख नहीं जाता, you will not walk or run on it, because it can cause also an accident. Understood, students? So what all things we have studied? We have studied about at home we should not use sharp objects. If we want to use the sharp objects like scissors, blades, knives, then we should take the help of an elderly person. Electric switches should not be touched with bare foot, है ना. bare foot मतलब पाँव में कुछ नहीं होना चाहिए, नंगे पाँव में नहीं छूना चाहिए. bare foot or wet hands on food. Yes. Next, matchsticks and lighters should not be used by yourself. It has to be handled again with the help of an elder. And I don't think so matchstick or lighter की आपको जरूरत कभी पड़ती होगी, so don't use it. Okay. So next, then books and copies. Books and copies should be kept at the proper place after studying, and toys should be kept back to the toy box after playing, because if anyone gets the feet on it, they will slip and they will break their bones, they will meet with an accident. And the last one we have studied at home, that mopping. While mopping means cleaning the floor with water. जब mop होता है मतलब cleaning the floor with water, that time also you should sit at one place till the floor is dry, totally dry, then only you should step on it. Understand that this was the safety rules that you should follow at home. So you are going to read it and understand it well, and tomorrow we will be doing, or in the next period we will be doing at school, what are the safety rules you have to or you need to follow. So students, don't only read this, understand it, follow it in your life. These are the safety rules that you should follow while staying at home, and you should also teach others और योर यंगर वंस, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी ये सब रूल्स आप बताएंगे, आप भी फॉलो करेंगे और आपके भाई बहनों को भी इन्फॉर्म करेंगे, राइट. सो दिस इज नॉट ओनली फॉर रीडिंग, दिस इज टू ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस. ये आपको अपने लाइफ में प्रैक्टिस में भी लाना है. ओके स्टूडेंट्स, सो मीट यू इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन टेक केयर, बाय, बी होम, बी सेफ.